Hello students, we will discussing about the digestive system. In previous part we have on left a question which belongs to the teeth. Arrangement of teeth in human buccal cavity. We have already read there are 32 teeth present in human being. Adult human being, there are 32 teeth are present. The arrangement of teeth in each half, upper and lower jaw as per incisor, canine, premolar and molar. The formula of dentition, in human being, in adult human being, is 2 1 2 3. 2 इंसिजर हाफ पोर्शन लेफ्ट में और 2 अपर में, और 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर, हाफ में ये और हाफ में लोअर साइड में. कितने हो गए? 8. 2 1 2 3 8, 2 1 2 3 8. हाफ में है, फुल करेंगे तो डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 16 एंड 16. 16 अपर साइड एंड 16 लोअर साइड, विच मेक्स द 32 टिप्स. डिफरेंट टाइप्स के हैं हेटेरोडोम एंड एम्बेडेड इनटू द सॉकेट, दैट इज कॉल्ड थैकोड. क्लियर? उसके बाद आता है फेरिंक्स. फेरिंक्स ओरल कैविटी leads to the pharynx. ओरल कैविटी जो होती है उसके बाद फेरिंक्स स्टार्ट होता है, ट्रैकिया जहां बोलते हैं. इट इज द कॉमन पाथवे ऑफ फूड एंड एयर. इट इज द कॉमन पाथवे of for food and air. और फेरिंक्स के बाद फेरिंक्स लीड्स ओपन किस में होता है? एसोफेगस के अंदर. देन एसोफेगस. फेरिंक्स ओपन into esophagus by glottis. Glottis, a cartilaginous flap is present at the mouth of windpipe, because pharynx is the common pathway for wind and air. तो विंड पाइप के अंदर फूड पार्टिकल ना जाए, इसके कारण से विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप होता है, ढक्कन होता है, लिड होता है. किसका बना हुआ? कार्टिलेज का बना हुआ, जो क्या काम करता है? इट प्रिवेंट्स द फूड पार्टिकल टू एंटर इनटू द विंड पाइप. ए कार्टिलेजिनियस फ्लैप कवर द विंड पाइप. कार्टिलेज जो फ्लैप होता है विंड पाइप को कवर कर लेता है, और क्या काम करता है? इसको क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस. दिस एपिग्लॉटिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स in windpipe. Esophagus is a long, narrow tube. It is a long
narrow tube which posteriorly passed through neck, thorax, and diaphragm. Esophagus is a long narrow tube which passed जो गुजरती कहाँ से, neck से, thorax से and diaphragm से and finally open into a J-shaped bag-like structure stomach and finally open into a J-shaped bag-like structure called stomach. स्टोमक के अंदर जाकर के ओपन होती है। इस एसोफेगस का स्टोमक में ओपनिंग होना डिपेंड करता है गैस्ट्रोफेरेंजियल स्फिंक्टर का। The opening of esophagus in stomach is controlled by gastropharyngeal sphincter। फाइन ओपनिंग जिसमें जाकर के एसोफेगस स्टोमक में ओपनिंग होती है, वो छोटा छिद्र उसको बोलते हैं गैस्ट्रोफेरेंजियल स्फिंक्टर। वो कंट्रोल करता है कि जो फूड आ रहा है एसोफेगस से कितनी मात्रा में है, कहाँ, स्टोमक के अंदर। तो देन द नेक्स्ट पार्ट इज स्टोमक। स्टोमक इट इज ए J-shaped structure which is present just above the abdominal cavity जो स्टोमक है, स्टोमक में आकर के एसोफेगस खुलती है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है स्टोमक का, एक जे शेप स्ट्रक्चर। ये है गैस्ट्रोफेरेंजियल स्फिंक्टर एसोफेगस। और इस स्टोमक के 3 रीजन होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। अपर पार्ट जो डोमला स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं फंडस, जहां पर आकर के एसोफेगस स्टोमक में ओपनिंग होती है। फाइन पोर को तो बोलते हैं गैस्ट्रोस्फिंक्टर, गैस्ट्रोफेरेंजियल स्फिंक्टर, और इस रीजन को बोलते हैं कार्डियक। एंड एट लास्ट द फूड यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। इस एरिया को बोलते हैं पाइलोरिक। Pyloric. There are 3 regions of stomach: fundus, cardiac, and pyloric. Fundus, it is a dome-like structure, upper part of the stomach. Fundus, cardiac. Esophagus open into the stomach through the gastropharyngeal sphincter. That area is called cardiac. And at last, the food released through the stomach into the small intestine. This region is called pyloric. तो इसमें आगे जोड़ देना, देयर आर 3 रीजन ऑफ द स्टोमक: फंडस, कार्डिक एंड पाइलोरिक। देन लास्ट पार्ट क्या आ गया, नेक्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट्स नेम इज स्मॉल बट इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनल।
its name is small, but it is the largest part of our alimentary canal. It consists three parts. It consists three parts. First, duodenum. Duodenum. It is the U shape. जो यहाँ से स्ट्रक्चर शुरू होता है, ये U shape रहता है, इसको बोलते हैं duodenum. तो क्या लिखेंगे? U shaped structure. Second one is jejunum. जो यहाँ के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लॉन्ग जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं जेजुनम. लॉन्ग coiled part of small intestine, jejunum. And the third one is ileum. Highly coiled जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको बोलते हैं इलियम. Highly coiled part of small intestine is called ileum. There are many finger-like projections present at the surface of small intestine, which are called villi or microvilli. We will discuss about villi later in next part. There are three parts of the small intestine. And the last one is ileum. ही जाकर किसमें ओपन होता है? ileum से large small intestine ओपन होती है large intestine में. So then the next part is large intestine. Large intestine. इसका नेम लार्ज है, बट ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथी नहीं होती, ये थिक जरूर होती. इट इज ए थिक ट्यूबुल स्ट्रक्चर. It also consists three parts. इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन सीकम. स्मॉल इंटेस्टाइन जहां आकर के लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है और नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहां सिंगल में है जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. दैट पार्ट इज नोन एज सीकम. It is the part in which small intestine open in large intestine. एक पार्ट, एक ये बात है, intestine, and the lower side it contains a finger projection which is known as vermiform appendix. Vermiform appendix is a vestigial organ. This organ is present in animals, but there is no function. इनका कोई काम नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? Vermiform appendix. This is the first part of large intestine. And the second part is colon. जो लार्ज इंटेस्टाइन इस प्रकार से अपर पार्ट से ट्रांसवर्स होते हुए नीचे आती है. ये जो पार्ट है इस ट्यूब को, लॉन्ग ट्यूब को क्या बोलते हैं? कॉलन. It is the long tubal structure of large intestine.
इसके भी 3 रीजन होते हैं। ये सारा का सारा कॉलन है जो लोअर से यानी सीकम से अपर की तरफ जाते हैं, इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन। और जो अपर से लोअर आते हैं इसको कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन। एंड दिस वन इज ट्रांसवर्स कॉलन। There are 3 regions of colon: ascending colons, transverse colon and descending colon. And colon के पश्चात colon open into a large structure, large storage structure called rectum. The third part is of large intestine is rectum. It is the wider part, wider or posterior, पिछला part of large intestine, in which the waste food stored बिफोर एक्सक्रीशन। इस फूड के अंदर, इस पार्ट के अंदर वेस्ट फूड कुछ समय एक्सक्रीशन से पहले यहाँ पर स्टोर होता है और फाइनली रेक्टम से वेस्ट फूड एनस की तरह बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। एंड फाइनली दिस वेस्ट फूड इज एक्सक्रीट थ्रू द बॉडी बाय द एनस। क्लियर?